आईटी हार्डवेयर सेक्टर के लिए जो है अप्रूव कर दी है। 17,000 करोड़ के इंसेंटिव्स इसमें दिए जाएंगे। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आपको पता है आत्मनिर्भर भारत को जो है पुश करने के लिए गवर्नमेंट लेकर आई थी, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एक बूस्ट दिया जा सके। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ कोर्स वो भी इसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इसमें होता क्या है कि कंपनीज जितनी सेल करती हैं उसके बेसिस पर उनको जो है वो 1% से लेकर 4% या 5% तक भी उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन से सेक्टर के लिए कितना इंसेंटिव अनाउंस किया गया है। तो अगर हम देखें, जैसे आईटी हार्डवेयर जो है सेक्टर, उसके लिए फरवरी 2021 में जो है 1 से लेके 4% तक के जो इंसेंटिव्स अनाउंस किए गए थे। बट ये जो पहला वर्जन है रहा है पीएलआई आईटी हार्डवेयर का, वो अच्छा नहीं रहा, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है। लेकिन अब इसमें इंसेंटिव्स को बढ़ा दिया गया है, 5% के आसपास तो एवरेज रहेगा इंसेंटिव। और कहा जा रहा है कि इससे जो है 1 जुलाई से ऑफकोर्स ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और कहा जा रहा है कि इससे हमारी 3.35 लाख करोड़ तक की जो है हम प्रोडक्शन वैल्यू इससे लेकर आ सकेंगे। और बिग ग्लोबल आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स जो है अपने प्रोडक्शन बेस इंडिया में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। गवर्नेंस इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज जो रेट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश और सल्फर जो है खरीफ सीज़न के लिए अनाउंस कर दिए हैं। और ऑफ कोर्स उसको रबी सीज़न जो है उसके लिए भी जो है वो रिवाइज़ किया गया है। अब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है क्या, 2010 में गवर्नमेंट लेकर आई थी। एक फिक्स्ड रेट ऑफ सब्सिडी दी जाती है पर केजी बेसिस पर, रुपीज़ पर केजी बेसिस पर। कौन से न्यूट्रिएंट्स के लिए? नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश और सल्फर के अंदर। अब आपको पता है मैक्रो और माइक्रो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और एनपीके जो है वो हमारे जो है सबसे कॉमन फर्टिलाइज़र होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो इंडिया में वो है यूरिया। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है फर्टिलाइजर्स का ग्लोबली। अब फर्टिलाइज़र सब्सिडी इंडिया में क्या होती है कि फार्मर्स जो हैं वो तो अपना मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर बाय करते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो मार्केट रेट है। अब एमआरपी जो है वो, जैसे नीम कोटेड यूरिया का अगर हम उसको देखें तो गवर्नमेंट ने वो फिक्स किया हुआ है कि 5900 के आसपास। ठीक है, लेकिन मार्केट में उसका प्राइस 17,000 से 23,000 पर टन रहता है। तो जो डिफरेंस होता है, जो भी अमाउंट, वो गवर्नमेंट सब्सिडी की तरह पे करती है। ठीक है, अब नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स जो हैं उनके प्राइसेस को डी कंट्रोल तो किया गया है, कंपनीज उसको खुद जो है वो डिसाइड करती हैं मार्केट के रेट पर। लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक फ्लैट पर टन सब्सिडी देती है, ताकि जो है प्राइसेस जो है वो रीजनेबल रहें। अब सब्सिडी पे कैसे की जाती है ये भी देख लेते हैं। तो सब्सिडी जो है वो फर्टिलाइजर कंपनीज को पे की जाती है, लेकिन उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो फार्मर होता है। कैसे? अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम में देखें, फार्मर आएगा, पीओएस मशीन में जो है वो अपनी ट्रांजैक्शन करेगा। वो तो फार्मर तो उतने ही पैसे देगा जितने जो है उसको आप सब्सिडी अमाउंट के बाद जितना रेट पड़ रहा है। जो डिफरेंस अमाउंट है वो फर्टिलाइज़र कंपनी को जो है ये पूरा केवाईसी करने के बाद उर्वरक प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो सब्सिडी फर्टिलाइज़र कंपनी को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अस्त्र। ये टॉपिक आपके जो है गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन टूल निकाला है जिसका नाम अस्त्र रखा गया है। तो ठीक है, इसका आप नाम पढ़ लेना, बहुत लंबा नाम है। तो अस्त्र जो है ये टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर के वेरिफिकेशन के लिए बनाया गया है, एक फेशियल रिकॉग्निशन टूल है। तो ये सब्सक्राइबर के डेटाबेस को, पूरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के डेटाबेस को जो है वो चेक करेगा और देखेगा कि कहीं कोई एक ही पर्सन ने बहुत सारे सिम कार्ड्स तो नहीं लिए हुए हैं। ठीक है, तो साइबर फ्रॉड्स को बचाने के लिए ये किया जा रहा है। अब 2012 में गवर्नमेंट ने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कहा था कि जितना भी सब्सक्राइबर का डेटाबेस आपके पास है वो सब हमसे शेयर करो, इंक्लूडिंग द पिक्चर्स। ठीक है, तो इन इमेजेस के डेटाबेस का इस्तेमाल करते हुए अस्त्र को बनाया गया है। अब ये अस्त्र काम कैसे करता है? पहले तो ये कन्वॉल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए डीप लर्निंग मॉडल इसने बनाया है। जो है इसमें इमेज और वीडियो दोनों को रिकॉग्नाइज करने का इसने एक तरीका सीखा है। और फेस कैसा होता है, फेस का एंगल कैसा है, ओपेकनेस कैसी है, डार्क कलर है इमेज का अगर तो कैसे पहचानना है फेस को, ये पूरा एक इमेज का जो है की एनकोडिंग सीख चुका है। अब फेस जो क्या कंपैरिजन जो है उस पहले तो समझता है कि फेस कैसे है। ठीक है, फेस को रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद उसका कंपैरिजन करता है। अब ये समझ लो आप, मैं अपने फेस पर मैंने कोई सिम कार्ड लिया हुआ है, और उसके बाद ये क्या करेगा अस्त्र, उस फेस को जो है वो देखेगा
और फिर अपने डेटाबेस में लगभग करोड़ फोटोज़ का जो डेटाबेस है उसके पास, वो उसमें देखेगा कि क्या इससे इस फेस से रिलेटेड कोई फेस मेरे पास मेरे डेटाबेस में है। तो उस 10 सेकंड के अंदर अंदर उस 1 करोड़ इमेजेस का डेटाबेस जो है ये पूरा जो है वो एक तरह से सर्च कर डालेगा। और अगर 97.5% तक का मैच अगर इसको लग रहा है किसी और फोटोग्राफ में, तो ये कहेगा कि ये दोनों सेम ही पर्सन है। ठीक है, तो इससे मैचिंग ऑफ सब्सक्राइबर्स जो है इस्तेमाल करते हुए का जो है ये काम करते हुए इंडिविजुअल जो है उसको पहचाना जाता है कि कहीं इस पर्सन ने जिसका फेस रिकॉग्नाइज किया गया है, कहीं उसने 9 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन कनेक्शंस तो नहीं लिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि क्या हो सकता है कि मैं अपना अलग अलग नाम, अपने अलग अलग आइडेंटिटी प्रूफ देकर फ़ोन कनेक्शन ले सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा फेस रिकॉग्नाइज हो गया, मेरा फेस जो है अलग अलग नाम के नंबर्स पर आ रहा है, तो गवर्नमेंट उन नंबर्स को बंद कर सकती है। ठीक है, ऐसा ही हुआ है। लगभग 87 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस को जो है अभी तक जो है एनालाइज किया जा चुका है परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लगभग 41 लाख ड्यूबियस मोबाइल कनेक्शंस पाए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो वेस्ट बंगाल में देखे गए हैं और उनको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। अब आने वाले टाइम में टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कहा जाएगा कि और भी जो है ये कनेक्शंस जो है जो जितने आगे पता लगते जाएंगे उनको ब्लॉक करो। फिर उसके बाद बैंक्स, पेमेंट वॉलेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इनको भी जो है वो नंबर शेयर किए जाएंगे और कहा जाएगा कि उनको भी आप ब्लॉक करो। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। ये भी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो है रूल्स जो है वो अमेंड किए हैं और इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड स्पेंड जो आउटसाइड इंडिया किए जाते हैं उनको लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर ही ले आए हैं। तो अभी तक क्या था कि एक लूप होल था इस एक्ट में, एक्चुअली इस स्कीम में रादर, कि इंटरनेशनल डेबिट कार्ड आपकी ट्रांजैक्शन तो जो है उसके ऊपर टैक्स तो लगता था, टीसीएस तो लगता था, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, लेकिन इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड की जो स्पेंडिंग होती थी वो रूल 7 में नहीं था। तो इसलिए क्या हो रहा था कि डेबिट कार्ड के ऊपर आप टीसीएस दे रहे थे अगर आप बाहर उसको स्पेंड कर रहे हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन पर आप टीसीएस नहीं दे रहे थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने अब ये रूल 7 जो ये एक लूप होल था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, रूल्स के अंदर, उसको अब एक्सक्लूड कर दिया है। अब इवन इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड की आप ट्रांजैक्शन करोगे फॉरेन टूर पैकेजेस के लिए, तो उसको आप उसके ऊपर 20% टीसीएस रूल अप्लाई होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप टैक्स पेयर हो तो 20% आप अगर आपने पे भी किया है तो ऑफकोर्स आपको ये जो है वो रिफंड हो जाएगा एज अगर आप अपना टैक्स भर रहे हो तो। ठीक है, सो ये जो है आपके परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम इंडिया अगर आप कर रहे हो, फॉरेन गुड्स की सर्विसेज, फॉरेन गुड्स खरीद रहे हो या फॉरेन सर्विसेज खरीद रहे हो, तो उसके ऊपर तो ऑफ कोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, बजट में कहा गया था कि मेडिकल रीजंस के लिए या फिर एजुकेशन के लिए अगर आप खर्चा कर रहे हो तो भी आपके ऊपर ये टैक्सेस जो टीसीएस नहीं लगने वाला है। ठीक है, अब जो है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है क्या, 2004 में आरबीआई लेकर आया था, जिसमें इंडियन जो है रेजिडेंट्स जो हैं उनको अलाउ किया जाता है कि वो $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर बाहर भेज सकते हैं। पैसा किसी भी वजह से भेज सकते हैं, चाहे ट्रैवलिंग के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडिंग के लिए, गिफ्ट या डोनेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट करनी हो शेयर्स में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी हो, किसी रीज़न के लिए भी जो है वो पैसा बाहर भेजा जा सकता है। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। फॉरेन एक्सचेंज की अगर आप अब्रॉड में बाइंग और सेलिंग कर रहे हो तो ऑफ कोर्स वो अलाउड नहीं है। लॉटरी टिकट खरीद रहे हो, प्रोस्क्राइब्ड मैगजीन्स खरीद रहे हो तो उसके लिए भी अलाउ नहीं है। शेड्यूल 2 में जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स के अंदर जो आइटम्स आते हैं वो भी अगर आप परचेज कर रहे हो तो उसके लिए भी अलाउ नहीं है। या फिर उन कंट्रीज़ में जाकर ट्रांजैक्शन कर रहे हो या पैसा भेज रहे हो जो FATF ने, जिनको नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ या टेरिटरीज़ का है, तो भी जो है वो अलाउ नहीं है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। पॉलिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस गया है राज्यसभा के मेंबर को, और वो अब जो है कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि राज्यसभा चेयरमैन ने कहा है। तो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, पावर, प्रिविलेजेस या इम्यूनिटीज़ जो है आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन पार्लियामेंट से डील करती हैं। अभी तक कोई पर्टिकुलरली लॉ तो बनाया नहीं गया है, इसलिए हम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस को ही जो है वो से ही तो हम गवर्न करते हैं। अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर्स के कंटेक्स्ट में देखें तो आर्टिकल 194 जो है वो प्रिविलेजेस को जो है वो गवर्न करता है। ठीक है, अब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या होता है? पहली बात तो प्रिविलेज क्या होता है?
अब आपको पता है ना कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस या लेजिस्लेटर्स होते हैं उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है ना, वो पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, उनके ऊपर उसके उसके उससे रिलेटेड कोई भी जो है वो एक्शन नहीं लिया जा सकता किसी कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। अगर वो इस प्रिविलेज की जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे तो उसको हम ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए ही जो है कंटेम्प्ट ऑफ हाउस अगर वो कर रहे हैं, हाउस को फंक्शन नहीं होने दे रहे हैं या अपनी जो प्रिविलेजेस का दुरुपयोग कर रहे हैं अगर हम कहें तो उस केस में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के जो है वो रूल लगते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो है स्पीकर जो है वो कमेटी को जो है वो रेफ़र करते हैं। और जैसे अगर हम देखें लोकसभा में प्रिविलेज कमेटी जो है उसमें 15 मेंबर्स होते हैं जो कि स्पीकर नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा के केस में डिप्टी चेयरपर्सन खुद ही हेड करते हैं कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस को, जिसमें 10 मेंबर्स होते हैं। तो रूल्स जो हैं वो लोकसभा में और राज्यसभा में जो गाइड करते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस को, वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। और सबसे पहले तो स्पीकर या फिर चेयर जो है, जैसे राज्यसभा चेयरमैन, उनको स्क्रूटनाइज करना पड़ता है कि जो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की जो है ये मोशन लाया गया है इस किसी भी पर्टिकुलर मेंबर के खिलाफ, क्या वो वैलिड है या क्या वो इन्वेस्टिगेशन के लायक है। अगर आगे भेज दिया जाता है तो अभी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर्स जो है उनको भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होगा अगर वो मेडिसिन प्रैक्टिस करना चाहते हैं इंडिया में, तो ठीक है, ऐसा नेशनल मेडिकल कमीशन के गाइडलाइंस ने कहा है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन क्या है, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा 2019 में जो है इसको बनाया गया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इसने रिप्लेस किया है। मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करता है। 33 मेंबर्स इसमें होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन, 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और 22 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब इसी में ही जो है मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल भी है, बेसिकली जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि स्टेट्स और यूटीज़ भी अपने व्यूज़ रख सकते हैं और एडवाइस कर सकते हैं एनएमसी को ऐसे मेजर्स लेने के लिए जिससे कि मेडिकल एजुकेशन में मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके कुछ 4 ऑटोनॉमस बोर्ड्स भी हैं, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। अंडर ग्रेजुएट बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ कंपनीज है। उन्होंने बोला है कि एक डीप वाटर पाइपलाइन बनाई जानी चाहिए गल्फ रीजन से लेकर इंडिया तक, ताकि जो है हम पाकिस्तान को बाईपास कर सकें, ठीक है। तो 2000 किलोमीटर की ये एनर्जी कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है मिडल ईस्ट से लेकर इंडिया में। $5 बिलियन तक का इसमें खर्चा आएगा, लेकिन फिर भी इससे जो है 7000 करोड़ तक की एनुअल सेविंग्स हमें हो पाएगी। अब ये सेज है क्या, एक न्यू दिल्ली बेस्ड सिद्धोमाल ग्रुप है, उन्होंने जॉइंट वेंचर किया है यूके बेस्ड डीप वाटर टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ। और इन्होंने प्लान किया कि मिडल ईस्ट से लेकर इंडिया तक एक डीप वाटर पाइपलाइन बनाई जाएगी और गैस रिच गल्फ रीजन को और मिडल ईस्ट रीजन को इंडिया के साथ कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। ये भी टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे अभी 17 मई को जो है वो ऑब्जर्व किया गया है। अब वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे जो है वो 17 मई को हर साल मनाया जाता है, ताकि इंटरनेट का यूज़ से सोसाइटी पर और इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है उससे रिलेटेड अवेयरनेस जनरेट की जा सके। अब 17 मई को ही क्यों मनाया जाता है, तो 1969 से हम मना रहे हैं 17 मई को, क्योंकि इसी दिन जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है वो बनाया गया था 1865 में, ठीक है। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन क्या है, एक यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर बॉडीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन करती हैं और ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो है वो उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड सेट करती है, ठीक है। ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम या सैटेलाइट ऑर्बिट्स एलोकेट करना, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स ग्लोबल लेवल पर जो है सेट करना, ये सारा काम ITU ही करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ये टॉपिक आपके सोशल इशूज़ और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एमी पोप जो है वो नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो है वो इलेक्ट हुई हैं। 1951 में IOM जो है वो बनाया गया था, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि माइग्रेशन के फील्ड में काम कर रही है। जब वेस्टर्न यूरोप से डिस्प्लेसमेंट हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तब इसको बनाया गया था और इसके पास परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस है, UN जनरल असेंबली ने दिया है 1992 से UN का। और 175 इसके मेंबर स्टेट्स हैं, ऑफकोर्स इंडिया भी इसका मेंबर है। अब ये 4 ब्रॉड एरियाज़ में काम करता है, माइग्रेशन और डेवलपमेंट, फैसिलिटेटिंग माइग्रेशन, रेगुलेटिंग माइग्रेशन और फोर्स्ड माइग्रेशन। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is PLI 2.0. This topic is important for your economy section. So recently, Union Cabinet has revised the production-linked incentive scheme for IT hardware sector, and the outlay has been increased to 17,000 crore rupees. So PLI scheme was announced to give a push to Atmanirbhar Bharat, and we want to increase the domestic manufacturing and we make it globally competitive. We want to generate employment through it also. Okay, so for that, what happens here is that the government offers certain kinds of incentives on incremental sales to the companies who are setting up manufacturing units in India. So uh, the aim is to have about $500 billion of minimum production in India in the next 5 years. So, what is the status of this IIT hardware sector in terms of PLI? So, the first PLI scheme for this sector was announced in February 2021, but this scheme was a laggard. So now, why? Because the incentives which were being offered were not too lucrative for the companies to set up manufacturing in India. But now, with this second version, the government has brought new incentives, and it is being said that the average incentive would be 5%. So it could be even more than that, and that would be a very attractive proposition for the big global IT hardware manufacturers to shift their production base to India. So it is being said that the government is expecting that incremental production value could touch 3.35 lakh crore rupees with this second version of PLI in IT hardware sector. So the next topic is nutrient based subsidy scheme. This topic is important for our economy section. So central government has recently approved the nutrient based subsidy rates for nitrogen, phosphorus, potash and sulfur for the kharif season, and it has also revised the same for the rabi season of previous year. So what is nutrient based subsidy scheme? It was initiated in 2010, and under this scheme a fixed rate of subsidy is given for the nutrients NPKs. So of course the aim is to ensure that the farmers use it in the balanced manner. So you know that there are two types of elements in fertilizers, macro and micro, and among these various types of elements, NPK is the most common one and the urea is the most consumed one. Okay, understand the difference between the two. So India is also the second largest consumer of fertilizers globally. This is an important fact for your exam. So what is fertilizer subsidy and what is the status in India? So farmers, you know that they buy this fertilizer at maximum retail price, but it is not reflective of the market rates. For example, MRP of neem coated urea is about 5900 per ton, which means that farmer buys at this rate, but actually the market price is about 17,000 to 23,000 per ton. The difference being the subsidy which is footed by the center. MRPs of non-urea fertilizers may have been decontrolled by the government, and it may be fixed by the companies based upon the market rates, but still the central government pays a flat per ton subsidy on these nutrients to ensure reasonable prices. So how is the subsidy paid and who gets it? Of course, the subsidy is paid to fertilizer companies, but the ultimate beneficiary is the farmer. How? So whenever the farmer goes and gets this Aadhaar unique, proves his Aadhaar unique through proves himself through the Aadhaar unique identity or through the Kisan credit card number, then this sale of fertilizer is facilitated through a POS machine, and through the e-Urvarak portal, the company gets the subsidy and the farmer gets to pay only the subsidized amount or the lowest amount of the fertilizer. Okay, so the next topic is ASTR or the Astra. This topic is important for your science and tech section and also your governance section. Department of Telecommunication has developed an artificial intelligence based facial recognition tool, and this tool is called Artificial Intelligence and Facial Recognition Powered Solution for Telecom SIM Subscriber Verification. So that's why the name is so big, that's why it is Astra is the good one. So Astra is basically meant for telecom subscriber verification. It will run checks on the subscriber database of telecom operators, which the Department of Telecommunication has collected since 2012. The aim is to bring down cyber frauds in India, and since 2012, the DOT has been receiving through all telecom operators the subscriber database, including the users' pictures. Okay, so how this ASTR works or how this Astra works? So it uses the
subscriber images, and it encodes them in its convolutional neural network model. And this is basically a deep learning model through which this AI is learning to differentiate the face structure, and how the color of the face can change, and how basically how to recognize a face. Okay, once it recognizes the face, then it starts comparing. It compares through its entire database of about 1 crore images in just 10 seconds. And if it finds any face which is about 97.5% as similar as comparable to the face that it is searching for, then it would conclude that these two are same people. And once the subscriber names are matched, then of course it sees that if there are more than 9 connections under this person's name, then of course those connections would have to be discontinued. So it has been pretty successful as of now. 87 crore mobile connections have been analyzed by the Param Siddhi supercomputer, and about 41 lakh dubious mobile connections have been identified, and about 36.61 lakh of them have been discontinued. The most of them, of course, being in the state of West Bengal. So what would happen next? The government would or the DOT would of course share these details with the telecom operators to block them further. And of course these details would also be shared with banks, payment wallets, and social media platforms for further action. So the next topic is liberalized remittance scheme. This topic is important for our economy section. So government has amended rules under the Foreign Exchange Management Act to bring international credit card spends outside India under the LRS scheme. So LRS, what was happening here is that it is quite funny that your international debit card transactions were inviting this tax collection at source, or TCS, of 20%. Okay, but your international credit card transactions were not inviting the same. So this was basically, you can say, an indirect subsidy to the rich. Okay, because it is being assumed by the government that credit cards are used by the rich people and the debit cards are used by the common people. So government was taxing the debit card transactions abroad, but it was not doing so for the credit card transactions until now. So now this loophole has been plugged, and this rule 7, which was excluding this international credit card, and has now been excluded itself. So now even the international credit card transactions for certain purposes, like for purchasing foreign tour packages, would also invite 20% TCS, like it was for the international debit cards. So of course it would not apply for any payments you make for purchase of foreign goods or services from India, but any foreign outward remittance through this under this LRS would invite this TCS. Of course, it would not apply for any educational purpose or medicinal purpose that you're going to spend, but for other purposes, for leisure purposes, this 20% TCS rule would apply. And also for that also, if you are a taxpayer, then of course you can claim a deduction because you have already, or you can claim advanced tax. Basically, like it is like TDS. Okay, if you pay it in advance, then once you file your ITR, then you claim that I have already paid this TDS on my income. Then of course I want this refund. This is going beyond the tax liability of mine, so you can claim a refund on TCS also. So this is not a loss for anyone. Anyways, what is liberalized remittance scheme? It was brought out by RBI in 2004, and it allows the resident individuals to remit about $250,000 per financial year for any purpose like traveling, medical treatment, studying, maintenance of close relatives, investment in shares, debt instruments, purchasing any immovable property. But there are certain restrictions also, like you cannot buy and sell foreign exchange abroad, or purchase lottery tickets, sweepstakes, proscribed magazines, and you can also not transact in with respect to the items which are restricted under the Schedule 2 of Foreign Exchange Management Rules of 2000. Also, you cannot make any transaction with those countries or territories which are
which have been declared non-cooperative by the FATF. Okay. So the next topic is breach of privilege. This topic is important for your polity section. A breach of privilege notice against a Rajya Sabha member has been recently referred to the Committee of Privileges for investigation by the Rajya Sabha chairman. So the powers and privileges and immunities of either House of Indian Parliament and of its members are laid down in the under the 105 article of Constitution. This Constitution says that Parliament can make a law regarding the same, but as of now, no law has been made. So we are following the British Parliamentary Conventions. The same privileges are dealt in the state legislatures as per the Article 194 of the Constitution. So, what is the breach of privilege? For that, you have to understand that the parliamentarians or the legislators, they have certain special privileges and powers so that the dignity and authority of the house can be maintained. But of course, these privileges are not codified as of yet. So that's why we are following the British Parliamentary Convention. So, but certain individuals, certain legislators, they can obstruct or impede the house or the state legislature. They misuse their privileges. So for that, breach of privilege is done, contempt of the house is done, and any speech or print or publishing of any article that can label the character or proceeding of the house is also considered as a breach of privilege. So in Lok Sabha, rule number 222 in chapter 20 deals with it. In Rajya Sabha, rule number 187 of chapter 16 deals with it. And of course, speaker or the chair is the first level of scrutiny for a privilege motion against any member. Once it certifies that this particular breach of privilege motion needs investigation, only then it goes to the Committee of Privileges. Then in Lok Sabha, the Privilege Committee consists of 15 members nominated by Speaker. In Rajya Sabha, Deputy Chairman heads the this Committee of Privileges, which consists of 10 members. So the next topic is National Medical Commission. This topic is important for our governance section. Doctors in India will now have to get a unique identification number to be able to practice medicine in the country as per the new regulations by the National Medical Commission. So NMC has been constituted by an Act of Parliament in 2019, and it replaced the Medical Council of India. So it regulates the medical education and medical professionals in India. So it consists of about 33 members, including the chairperson, 10 ex officio members, and 22 part-time members. It also has this medical advisory council, which basically provides a platform to states or UTs so that they can put forth their views with respect to the medical education sector. Okay, there are also 4 autonomous boards which are also part of this NMC. So the next topic is South Asia Gas Enterprise. This topic is important for international relations. So South Asia Gas Enterprise is an international consortium which has suggested that a deep water pipeline project should be made from between Gulf to India, and it has sought support from the Ministry of Petroleum for the same. The proposed 2,000-kilometer long energy corridor would connect Middle East and India. It would be about $5 billion worth of project, but it could lead to an annual saving of about 7,000 crores for us. So this SAGE is basically a joint venture between New Delhi-based Sidhomal Group and a UK-based deepwater technology company, and they are envisioning a pipeline which would connect the gas-rich Gulf region and Middle Eastern regions to India. Okay. So the next topic is World Telecommunication Day. This topic is important for your international relations. So this day was recently celebrated on 17th of May to help to raise awareness of the possibilities that the use of internet can and other information technologies can bring to societies and economy. So it is celebrated every year on 17th of May because on this very day, International Telecommunication Union was founded in 1865. So what is International Telecommunication Union? It is a United Nations specialized agency. It is an intergovernmental organization which coordinates between governments and private sector bodies. So it is located in Geneva, and it also allocates global radio spectrum, satellite orbits. It sets up the minimum standards with respect to telecommunication or ICT, and India has been an active member of ITU since 1869. Remember that India is not a founding member, but it is a member since 1869.
So the next topic is International Organization for Migration. This topic is important for your social issues and international relations. So Amy Pope has been elected the next Director General of International Organization for Migration. So this IOM was founded in 1951 after the Second World War, when there was chaos and displacement around Western Europe. So it was granted the permanent observer status of to the UN General Assembly in 1992, and India is also a member of this organization. Okay, so it works in four broad areas of migration management: migration and development, facilitating migration, regulating migration, and forced migration. So these were our topics for today. We please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time. Until then, goodbye and take care.